Hello friends, I'll welcome to the complete SEO course. Okay, this is not a planned or a course where I am going to explain about the part of SEO, ऑन पेज क्या है, ऑफ पेज क्या है, टेक्निकल क्या है, या फिर आप किस तरह से वेबसाइट वगैरह ऑप्टिमाइज कर सकते हो. दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ कोर्स बट आई हैव टेक द हेल्प ऑफ गूगल सर्च डॉग. ओके, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है या जो भी मेरी लर्निंग्स हैं, ओके, उन सब को एनालिसिस करने के बाद मैं ये कोर्स लेके आया हूँ जिसमें हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं गूगल की डॉक्यूमेंट्स है कि व्हाट इज द एसईओ, लिंक्स क्या होती है, ये किस तरह से गूगल ने अपने डॉक्यूमेंट्स में एसईओ को एक्सप्लेन किया है, व्हाट आर द एसेंशियल्स. बिकॉज करंटली द प्रॉब्लम इज हैपनिंग इज कि लॉट्स ऑफ पीपल आर जस्ट रीडिंग अबाउट द एसईओ. कोई कोचिंग्स के अंदर, कोई इंस्टीट्यूट के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाके एसईओ सीखते हैं. बट रेयरली, और आई कैन से ओनली 1% ऑफ द पीपल रीडिंग अबाउट द एसईओ फ्रॉम द गूगल सर्च डॉक. ओके, बहुत सारे लोग गूगल की डॉक्स पढ़ते ही नहीं है कि व्हाट आर द गाइडलाइंस, व्हाट गूगल सेज अबाउट द स्पेसिफिक टॉपिक्स. ओके, जहाँ भी हम जिन भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से सुनते हैं, हम इन्फ्लुएंसर से सुनते हैं, जहाँ से भी हम सुनते हैं, वी कीप इट एज एन ट्रूथ ऑफ द एसईओ एंड वी स्टार्ट implementing that things. बट what आई सजेस्ट कि आप कोई भी चीज़ में अगर कोई वेबसाइट ऑप्टिमाइज कर रहे हो या कोई भी टेक्टिक्स आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो या फिर रिलेटेड टू कोई भी क्वेरी है, तो आप एक बार स्टेप बाय स्टेप गूगल के सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हो कि गूगल क्या उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में कहना चाह रहा है. ओके, सो ये कोर्स कंप्लीटली सराउंडेड दैट डॉक्यूमेंट. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन each and everything from that document, कि what it is, if everything related to the SEO. And definitely once this course will be complete, okay, you will have the very good clarity in the SEO, so you will apply the tactics very effectively. Okay, so let's start this course. Okay. Okay, simply, let's start the overview. Okay, so everyone knows about the search engines. What are the search engines? Okay, what is SEO, like search engine optimization? Okay, like what we do in SEO. So simply let me just brief you about that. SEO is nothing just but when we optimize our website as per the guideline of any search engine. So that's called SEO. Okay, and search engine, there are so many search engines including the Google, but just because of the wide यूज ऑफ द गूगल वी से द गूगल ऑप्टिमाइजेशन, और जनरली हमें एक ही सर्च इंजन पता होता है विच इज गूगल. ओके, सो इस कोर्स में भी हम लोग गूगल के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, गूगल सर्च के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एवरीथिंग. के सो व्हाट आर द सर्च एसेंशियल्स. ठीक है, जो भी सर्च है, क्वेरीज हैं, जो भी है, बट बिफोर उससे पहले उसकी ज़रूरत क्या क्या है. कि इतनी इतनी चीज़ों की तो आपको ज़रूरत ही है अगर आपको कोई भी वेबसाइट ऑप्टिमाइज करना है तो. ओके, सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स. अगर आप कोई वेबसाइट पे काम कर रहे हो और आपको अगर उसे ऑप्टिमाइज करना है, तो देयर आर द सम टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक दैट वेबसाइट. ओके. Okay, so because what Google need from a web page to show it the Google search. ओके, अब वो अपने सर्च इंजन में किसी भी वेब पेज, किसी भी वेबसाइट को डिस्प्ले करने से पहले व्हाट इट वांट, व्हाट गूगल वांट फ्रॉम द यूजर्स, व्हाट गूगल want from the webmasters to show their website in the search. Okay, spam policies. Okay, the behavior and the tactic that can lead to lower ranking being completely omitted from the Google search result. Okay, like we are going to understand their spam policies in detail in the further videos, but as of now in this video, okay, as of now in this video, I'm just taking an example. If suppose that you are creating spam, okay, your website look like a spam website, then definitely Google is taking down it in the Google search result, and might be Google can punish you
or will not show your website again in the search results until and unless you don't optimize it. Okay, so what are the key best practice, the main things that can help improve how your site appear in Google searches or Google results? यानी कि what are the things, what are the parameters, okay, which Google see, which Google check, and which you have to optimize, okay, to be appear in the Google search results. Okay, so simply the Google has already described, we everyone we knows about that कि Google is like organic traffic हमें लाना हो तो we do the SEO. This is not something like the paid campaigns or anything else. Okay, so simply Google is also say it doesn't cost any money to appear in the Google search results, no matter what anyone's trying to tell you. It is important, okay, let's try to understand. It is important to note that just because of a page meets all the requirements, best practice, doesn't mean then Google will crawl, index, serve it content. Okay, first, that in further videos we will learn how search works. Okay, how search works, so let's first clear the complete requirements. Okay, the technical requirement cover the minimum that Google search needs to web pages in order to show the search results. There are actually very few technical things you need to do. Okay, most sites pass the technical requirement without even realizing it. Okay, गूगल के टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स बहुत मिनिमल हैं। मैं इनकी जब भी हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं या वर्डप्रेस में वेबसाइट डेवलप करते हैं तो बहुत सी वेबसाइट डायरेक्टली गूगल की रिक्वायरमेंट्स पास भी कर जाती है, इवन तो उन्हें पता भी नहीं होता कि वी हैव ऑलरेडी मेड द गूगल रिक्वायरमेंट। ओके, सो there are some spam policies also. Okay, that is also we will discuss in the there. Then there are some key practices like, okay, this is very most important that you have to keep in mind, that key best practice. Okay, why it is practice? Because we everyone know that SEO is not like that you will do once, or like it is not the job of one click, or we cannot say that कि आज SEO कर दिया then there is no need to do anything tomorrow. SEO is practice, keep implementing the tactic, keep optimizing your website. So here are these some key best practice decided by the Google. So what we can do? Okay, so let's go one by one. While there are the many things, okay, you can do to improve your website SEO, there are the few core practice that can have the most impact on your web page. Okay, so what are these? First of all, most important, generally most of people forgot about this. Create helpful, reliable and people first content. Okay, जैसे ही हम वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल्स थिंक दैट कि ठीक है यार, गूगल ट्रिकी हो जाए, मेरी वेबसाइट रैंक कर जाए या मुझे थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल जाए। ओके, सो वी क्रिएट कंटेंट कंप्लीटली targeting the keyword ranking, traffic or something like that, but this is not actual true. The first and most priority should be create a helpful, reliable and people first content. If user will like your content, then definitely Google also will show your website in the search results. Okay, then second, use words that people would use to look for content. They place those words prominent location on the page, such as title, main page and the other descriptive locations such as a अल्ट टेक्स्ट और लिंक टेक्स्ट। ओके, सो व्हाट इट इज, माइट बी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इफ यू वांट टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट, ओके, तो आप कीवर्ड को टाइटल में रखिए, हेडिंग्स में रखिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में रखिए, एल्ट टेक्स्ट में लिखिए, वेब पेज के ऊपर आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं। सो हियर गूगल इज नॉट completely using the word keyword, because keyword is not but just whatever the user search on the web pages, it's called keyword. Okay, if I say that what is SEO best practice, so this is my keyword. Okay, if I will hit the enter button, you will see the some results. Okay, so that is something like this, कि whatever user wants to search, okay, या whatever user is looking in the content, or if your web page is relevant to the user's query, then there are high chance कि आप search results में आपकी website दिखने लगेगी.
So keep that word. Okay, so optimize your page, keep that specific word in the title, meta description, man headings, in content, in locations, descriptive locations. You can say in alt text, you can say in link text, you can create a anchor text. So, okay, and you can use in the content. Okay, simply that's it. Then make your link crawlable so that can find other pages on your site via the links on your page. Okay, so आपकी जितनी भी links हैं, so don't keep them कि Google will not be able to crawl them. So your link should be crawlable and Google should be able to index them. Okay. Then tell people about your site. Be active in communities where you can tell like-minded people about your services and products that mention on your site. Okay. Then third, this is not done. When you optimize your website, that's not done. Just tell your like-minded people about your product, service, or your website that you are in the market, and these are the content, website, services, product are related to them. Market them. Okay. So and other, if you have other content, okay, if you have other content such as images, videos, structured data, JavaScript, you are following those specific best practices so that we can understand the part of your page too. Okay, we have to optimize your image, video, structured data. We will see in the detail about the structured data and everything. But if these are done, so you can optimize them so Google can understand the website in detail. Okay, enhance how your site appear on the Google search by enabling feature that makes sense to your site. ओके, जितने भी आपकी वेबसाइट में फीचर्स हैं, पेजेस हैं, आप उन्हें एनहांस करें, ऑप्टिमाइज करें सो गूगल कैन शो दैम आल्सो इन द सर्च रिजल्ट. Okay, if you have the content that shouldn't be found in search result, okay, you won't opt out entirely or use the approximate method to controlling how your content appear. Okay, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई ऐसा कंटेंट है, पेमेंट का पेज है या कोई भी ऐसा कंटेंट है जो आपकी वेबसाइट पे आपको नहीं दिखाना है, सर्च रिजल्ट्स में नहीं दिखाना है, तो यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम दिस सम टेक्निकल मेथड आल्सो. Okay, so these were the sub key best practice. We have seen then what are the essentials or what we can do. So in the next lecture we are going to see in detail about how Google search works and everything. Okay, so that's it for this lecture. So we are going to discuss more about the this completely document in the upcoming lectures. So if you haven't subscribed, then subscribe us. Okay, add this playlist in your bookmark. Okay, thank you so much, and press the bell icons, like the videos. If you like the content, then comment. Thank you. Thank you so much.